Assalamu alaikum class 9. Today we are going to discuss gold foil experiment of Rutherford, and we will also see how Rutherford discovered nucleus. First of all, you must know who was Rutherford. Rutherford was a British New Zealand chemist. He performed a series of experiments using alpha particles. In last lectures, I have also told you what are alpha particles. Again, in this lecture, we will discuss alpha particles. Alpha particles are the nuclei of helium 24. हीलियम 24 के न्यूक्लियाई को हीलियम 24 के एटम्स को हम अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो परफॉर्म किए। He won the 1908 Nobel Prize in Chemistry. Nobel Prize is one of the greatest prizes that he has won in 1908. In 1911, he proposed the nuclear model of the atom and performed the first experiment to split atom. Yes, atom को तोड़ना, atom to break atom, जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बेसिस है एटॉमिक बॉम्ब की। ये जो बेसिस है ये भी हमें रदरफोर्ड ने प्रोवाइड की। Because of his great contributions, he is considered as father of the nuclear science. One of the very frequent MCQ, who is the father of the nuclear science? Rutherford. Now let's have a look what he did. He bombarded alpha particles on a 0.00004 centimeter thick gold foil. Now what he did? गोल्ड फॉइल एक जो है सोने का जो है उसने पेज लिया, जस्ट लाइक द एल्यूमिनियम फॉइल विच यूज्ड इन द फूड। उस पे उसने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया सिर्फ ये देखने के लिए। और यहाँ पे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इसकी थिकनेस चेक करें। देयर आर 4 zeros बिफोर द 4 सेंटीमीटर, मीन्स इट इज वेरी 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 थिन गोल्ड फॉइल। ये बहुत ही पतली लेयर है फॉइल की, जस्ट टू इंश्योर दैट वी गेट ओनली वन लेयर ऑफ एटम। अब देखिए गोल्ड है, ऑफ कोर्स इट इज हार्ड, दिस गोल्ड इज हार्ड। तो अगर आप एक दीवार पे यू थ्रो अ बॉल ऑन अ वॉल, देन इट बाउंस बैक टू यू विद फुल फोर्स। अगर आप एक दीवार पे बॉल फेंके तो आपके पास वो बॉल वापस फुल फोर्स में आएगी। He has imagined as gold is a solid. If I will bombard, I will throw alpha particle on that solid, it will come back to me with the same force, just like the ball. लेकिन अगर आप वही बॉल किसी मैट्रेस के ऊपर जो है वही उसी दीवार के आगे एक मैट्रेस रख के उसको जो है वो मारें, तो वो बॉल इतनी ज़्यादा जो है वो बाउंस बैक नहीं होगी, बल्कि वो वहीं पे मैट्रेस के पास जो है वो गिर जाएगी। वाई? बिकॉज द मैट्रेस इज अ सॉफ्ट मटेरियल। लेकिन अगर उस दीवार की जगह पे देयर इज अ सिंपल पेज और आप पूरी फोर्स के साथ मारें तो बॉल आपके पास कभी भी वापस नहीं आएगी, इट विल पास अवे। Same idea was used by the Rutherford. He want to check what happens if I throw something on the layer of the atom. Before moving forward, we must know what are alpha particles. As I have told you earlier, alpha particles are emitted by radioactive elements like radium and polonium. Radium and polonium are the elements. Radium का symbol Ra, polonium Po. अब ये जो radioactive elements हैं, we know they emit radiations every time. और वो जो radiations उसमें से निकल रहे हैं alpha particles. These are actually helium nuclei. They can penetrate through the matter to some extent.
और ये मैटर में जो है वो कुछ हद तक जो है वो उसके अंदर जा सकते हैं। अब यहाँ पे जो है वो आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नजर आ रही है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट की, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की। व्हाट ही डिड, हियर इज अ रेडियो एक्टिव सोर्स। इस रेडियो एक्टिव सोर्स के अंदर उसने क्या रखा है, रेडियम या पोलोनियम। ये जो सिंबल है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट का सिंबल हो। अब जो इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का सिंबल है यहाँ पे जो है दिस येलो कलर इज द गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल है, उस गोल्ड फॉइल के इर्द गिर्द ये जो रिंग आपको नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली अ डिटेक्टर। नाउ व्हाट हैपेंस, this box is closed from all the side, only a hole is present here. From this hole, beam of the alpha particle is emitted from the radioactive source. Beam of the alpha particles are emitted from this and it strikes on the gold foil. Now, what we should expect. We should expect that this is a solid, this is gold foil, it is a solid particle. All the particles should come back right away, but actually this doesn't happen. Most of the particles pass through the gold foil. Most of the particles pass through the gold foils and they produce a flash on the detector. यहाँ पे उसने डिटेक्टर के ऊपर जो है वो फ्लैश प्रोड्यूस की, which showed that particles pass through the gold foil. और ये जो अब देखें यहाँ पे जो है वो पार्टिकल्स तो बिल्कुल एक ही स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, आकर जो है वो इसे स्ट्राइक कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो है वो जो डिटेक्टर पे अब क्या होना चाहिए था, अगर इसने इसमें से पास करना है तो सीधा जाती, ये बिल्कुल जिस तरह स्ट्रेट बीम जाती यहाँ से, और जहाँ पे आके आपको एक ही जगह पे हमें यहाँ पे पॉइंट मिल जाता स्ट्रेट बीम का, बट इट डजंट हैपन। वी गॉट different points on all over the detector, means that these alpha particles are scattered in different angles. Why does it happen? Why these particles scattered all the different ways? And you can see here one particle just bounce back, just one particle bounce back and most of the particles passed through it. Here we can see the scattering of the alpha particles by atoms of the gold foil. Now we can see what is happening at the atomic level. These yellow circles which you are seeing basically are the layers of the gold foil atoms. Gold foil atoms की layers हैं and these plus nuclei are the helium nuclei. Most of the helium nuclei pass straight through the gold foil. But there are some alpha particles which were deflected, which were not straight, which were deflected at some angles. And this deflection was very small. And some particles show the large deflection. Deflection means they move away from their path. And there were very, very few particles which totally repelled back. Why this happened? What does it mean that some particles pass straight, some particles show small deflection, some particles show the large deflection, and some particles totally repelled back? As I told you before, if there is empty space, the particles will pass straight. Helium nuclei अगर किसी जो है वो सॉलिड चीज से नहीं टकराते, किसी जो है वो उसको एम्प्टी स्पेस मिलती है वहां से वो स्ट्रेट पास कर लेते हैं, लेकिन अगर उनके रास्ते में कोई हैवी चीज आ जाती है तो वो उनसे थोड़ा सा टकरा कर जो है वो अपना रास्ता बदल लेते हैं। अगर वो बिल्कुल उसके जो है वो ऊपर जाकर टकराएं किसी हैवी चीज के, जिस तरह सख्त दीवार के ऊपर आप बॉल मारेंगे, वो दीवार सख्त होगी तो टोटली जो है वो बॉल वापस आ जाएगी। तो सिमिलरली अगर हीलियम पार्टिकल्स एटम के अंदर किसी मौजूद सख्त चीज से जाके जो है वो टकराते थे तो वो वापस आ जाते थे। नाउ व्हाट्स ऑल दिस, we will look at the observation and results of the Rutherford experiment.
First of all, what are the observations of Rutherford? As we have already looked, almost all the particles pass through the foil undeflected. ज्यादातर पार्टिकल्स जो हैं वो फॉइल में से अनडिफ्लेक्टेड जो है वो पास हो गए. एंड आउट ऑफ 20,000 particles, only a few were deflected at fairly large angles, and very few bounced back on hitting the gold foil. 20,000 particles में most of the particles were passed, but very few were deflected, and a very few bounced back, hitting the gold foil. Why does this happen? ज्यादातर पार्टिकल्स क्यों गुजर गए, थोड़े से क्यों डिफ्लेक्ट हुए, और उसमें से भी जो डिफ्लेक्ट हुए उसमें से चंद एक थे जो कि बाउंस बैक हुए. अब हमने जो है वो इसका रिजल्ट देखना है. इन ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे रदरफोर्ड ने जो है वो प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम जो है वो प्रेजेंट किया. अकॉर्डिंग टू हिम, न्यूक्लियस इज इन एट द सेंटर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. दिस इज द रदरफोर्ड्स model. Now, what are the results of experiment? Since most of the particles pass through the foil undeflected, ज़्यादातर particles जो हैं वो undeflected बगैर मुड़े जो है वो इसमें से गुजर जाते हैं. Therefore, most of the volume occupied by an atom is empty. We can conclude कि atom के अंदर कुछ भी नहीं है. Atom is an empty space. That's why these blue lines pass through it very easily. एटम के अंदर जहाँ पे कोई हार्ड चीज होती है जो कि बिल्कुल सेंटर में है, अगर उसके पास से कोई पार्टिकल गुजरता है देन इट शोज सम डिफ्लेक्शन. अगर वो उसके बिल्कुल ऊपर से आगे स्ट्राइक करता है देन इट डिफ्लेक्ट, इट हिट बैक टोटली, रिपेल्ड बैक. The deflection of the few particles prove that there is a center of the positive charge. सिर्फ चंद पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट होते हैं, इससे साबित होता है कि कोई सेंटर है पॉजिटिव चार्ज का, क्योंकि जो पार्टिकल्स हम स्ट्राइक कर रहे हैं दोज आर आल्सो पॉजिटिवली चार्ज्ड, और पॉजिटिव को रिपेल करता है, ये बात हमें पता है. ठीक है, पॉजिटिव जब पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जाके टकराता है तो वो जो है वो इसको रिपल्शन देता है. तो दैट सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज बेसिकली ही कॉल्ड इट न्यूक्लियस. Nucleus means central entity. The complete rebounds of the few particles show that nucleus is very dense and hard. कुछ particles जो totally rebounds हो गए थे उससे that prove कि that nucleus is very hard and dense. And since few particles were deflected, it shows that the size of the nucleus is very small. Nucleus is of very small size as compared to the total volume of an atom. तो यहाँ पे जो है वो हमें न्यूक्लियस का आइडिया दिया है रदरफोर्ड ने कि एटम के सेंटर में एक हार्ड डेंस चीज है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एंड दैट पॉजिटिव चार्ज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. गोल्डस्टाइन टोल्ड अस कि दैट पॉजिटिव चार्ज आर प्रोटॉन, एंड दैट प्रोटॉन आर प्रेजेंट, all protons are present in the center of the atom, and when some positive charge hit on that center then it is repelled back. Now, where are electrons according to the Rutherford? According to the Rutherford, the electrons revolve around the nucleus. There is no some definite path. And you can see here it is the nucleus. Nucleus has proton and nucleus has neutron, and the electrons are randomly moving around the nucleus. There is no some definite path of that electrons. Electrons are just revolving and revolving. An atom as a whole is neutral. Therefore, the number of the electrons in an atom is equal to the number of protons. That's why atom has no charge. What are the nucleons? Except the electrons, all other fundamental particles that lie within the nucleus are known as nucleons. Means we can say proton and neutrons are collectively called nucleons. Protons and neutrons are collectively called
nucleons. Now, there are some drawbacks of Rutherford atomic model. As this model was presented in front of the scientific society at that time, scientists started what are the defects of the Rutherford atomic model. First defect, according to the classical theory of radiation, electron being the charged particle should release or emit energy continuously, and they should ultimately fall into the nucleus. Classical theory of radiation क्या है कि if you start running, you take a simple your examples of something, of a living thing, or whatever the matter, that if you start running, your body will emit radiations. Your temperature of your body will increase, and the time will come, your energy decreases slowly, and you stop moving. Same is the classical theory of the radiation कि इलेक्ट्रॉन बीइंग द चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन हर वक्त भाग रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, भागे जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जो चीज मूव कर रही है तो लाजमी तौर पे उसमें से रेज जो हैं वो निकलती हैं। इफ एनर्जी इज emitting from it, it means कि एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। A time will come, electron will tired and it will fall into the nucleus. और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाता है तो क्या होगा? एटम खत्म, the structure of atom will collapse. Here you can see this is the positive center, positively charged nucleus, and electron is moving around it. A time for suppose a time when electron is moving at this path, it start moving. A time will come, it will emit an energy. ये अपनी एनर्जी लॉस करता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता इट विल कम क्लोजर टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के करीब आता आता इट विल फॉल बैक इनटू द न्यूक्लियस and the structure of the atom will collapse. How it does it prove? From where electron gets energy to revolve? Question is this: what makes electron to move around all the time? अगर Rutherford ये कहता है कि electron is moving around the nucleus, from where electron is getting the energy? That is the point of the scientist. That is the one of the biggest fault in the Rutherford nucleus, because according to this, electron will fall into the nucleus one day and atom will collapse. Then why? But it doesn't happen actually. Then why atom exists? It means this explanation is not satisfactory, that electrons are moving around the nucleus every time. Second fault: if the electrons emit energy continuously, now Rutherford is saying electron is moving continuously. If it is moving, then according to our theory, it is radiating energy every time, then they should form a continuous spectrum, but in fact line spectrum was observed. Here you can see here are two types of the spectrum. Continuous spectrum is just like the rainbow spectrum, which shows every time energy is emitting. Sometime it is of the high wavelength, sometime it is of the low wavelength, but every time energy is emitting. अगर हम इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रम लें तो इट शुड प्रोड्यूस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बिकॉज इट इज मूविंग कंटिन्यूसली अकॉर्डिंग टू हिम, but actually it doesn't happen. What we got the emission line spectrum. Here you can see it's a black background and there are some bright lines. These bright lines shows a signal. We get signal at this point, then we get no signal, means no energy is radiating. Then we get signal, means electron is moving. Then we get signal, then we get no signal, black line. Again we get some signal, that means electron has moved. Again there is no signal, means electron is not moving. So this spectrum provide the basis of their questions, proof of the questions that electron is not moving around the nucleus. So the Rutherford model set the new dimensions of the new discoveries.
scientists started to think, how can an atom collapse, or why atom stable? And secondly, why does an atom give line spectrum? Line spectrum क्यों आया है? And thirdly, scientists considered there must be another model of atom. It indicated that Rutherford model was not perfect. Although the Rutherford atomic model was a big discovery in the nucleus and in the field of the atomic theory development, as he has introduced the nucleus. He has totally changed, revolutionized the concept, the presence of the positively charged particles. पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं, इसके ऊपर तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स हर वक्त जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे हैं, ये बात जो है वो ऑब्जेक्टेबल हो गई और इसका जो है वो साइंटिस्ट ने प्रूव भी दिया. एंड देन scientists started to discover where electrons are actually present in an atom. And in the next lecture, we shall see where electrons are present in new model. Now, students, says your home task. What are the observation of the Rutherford experiment? Secondly, these are short questions. You have to write down these short questions on your notebook. What are nucleons? What are the defects of Rutherford's experiment? How Rutherford explained the existence of nucleus? And what did the planetary model say about the position of positive and negative charge? Thank you, student.